Hello. Okay. Awesome. So let's talk about Caesar. So Caesar was a great Roman Empire, emperor or a dictator per se. He had one problem like all of us. He had trust issues. Yeah. Believe me, it was still there. Sure, the trust issues were the parts we were there. We were good permitted. So what happened was a lot of his generals around him, they thought कि मैं इनको कुछ बता रहा हूँ और मेरे एनिमीज को पता चल रहा है. So he thought कि ऐसा क्यों हो रहा है and उसके वजह से उसके मन में एक मिसट्रस्ट आया. But Caesar was very smart man. They thought I had to do something so that even if they get the message, they will never be able to figure out what the message was. So they gave up the whole technique wherein is shifted every word by 3. So K became N, B became E, and henceforth. So उससे क्या हुआ? Words became all jumbled, but they were shifted by 3. Okay? So in a simple character, so the example that I have to here was, let's say there was a word wrong, R-A-M. So R would be shifted by 3 letters, A would be then converted into B, and then N likewise. Now this was a very cool way, but it had one flaw. We'll get to that later. So welcome to the basics of cryptography, which was started, we'll say it was started because that's the first official record we have by Julius Caesar. Okay? Now moving on, we find out about me, their self, what it is, because everyone else, you all in mind, so I will fight both in mind. Okay, I've been working in the security domain for 8 years. I have a great inclining towards maths, so that's why I gave it the computer science, and the security was just a math made them. It worked out for me. And I am a part-time singer, but I'm not playing it with today. Anyone interested can join me later. You are, links would be on it. Okay, so what is cryptography? So cryptography is nothing but a part to hide the message in such a way that if anyone finds that message, he would not be able to read it. That's a very basic concept of cryptography. It is an art. It's also a study of how you encrypt or you crumble your message so bad that even if someone finds it, you will not be able to read it. That's the basic of it. आपको इतना ज़्यादा जिब्रिश कर देना है आपके मैसेज को, जहाँ कोई बीच में पकड़ भी नहीं उसे तो पढ़ना पाए. So that is what cryptography is. In this session, I will try to cover the ways in which you can convert a plain text or any message in such a gibberish that there is no linear progression or no single arithmetic equation. When I say arithmetic equation, तो पाइपा नहीं है. एक सिंपल फॉर्मूला लगा के आप फाइनल आंसर पर नहीं पहुंच सकते. हाँ, ये सिंपल एग्जांपल होता है. इसलिए आप बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा. ये बात सब सुना होगा. That resembles chaos theory. Chaos theory का मेन फंडा ये होता है, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो ही आप फाइनल पॉइंट पे या फिर बीच में कहीं भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जब नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, then you can never find out what the next point is. So the cryptography, entire cryptography, based on the fact you come to randomizing your input, randomizing your plain text, itna bad that the ciphertext is not recognizable at all. So obviously cryptography has different types. There is weak cryptography. अब सब लोगों ने सुना होगा कि ये क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम बीट है. आई एम होपिंग यहाँ पे सब लोग बहुत सब क्रिप्टिक सब फॉरवर्ड क्रिप्टोग्राफी. ये वाला एल्गोरिथम कमजोर है या ये तरीका कमजोर है. So there are a couple of types of cryptography. Let's go. Some is used to prevent your system without checking out your things in your laptop. And the second is what you'll be talking about right now, which is the meat of cryptography, which stops the bad guys from checking out your data. And now, these try to connect the dots. So cryptography, I'll talk about today. It is not something out of the world. It is something that you are using right now, and you will be using preferably for your time likes. So it will be a cool thing to add on to your arsenal that you know about how cryptography works and how it
when you enable end-to-end encryption in your WhatsApp, and you think that your first person will not find out about the second, then we need to know how it works, but we need to be sure, right? So we learn about that here. So let's talk about encryption framework. This is the simplest form of encryption framework, wherein you have a plain text, you have some algorithm, we'll dive into that later, and then what you get is gibberish. So for any encryption, the main part is that plain text passes through an algorithm and then is converted into a non-readable or a format that cannot be comprehended. That text that comes out is called as ciphertext. Okay? Please note these values. These are some terminology that I keep on using moving on. So it's better that you keep on note of. Plain text is what something that you would want to say. You have an algorithm in place that changes that, randomizes that, and then what you get is ciphertext. Alright? So, it's not clear on that. Then let's jump right in. There are mainly two types of encryption algorithms, symmetric and asymmetric. Now, when we talk about symmetric algorithm, what happens is, let's take Caesar's example, which is also known as the Caesar cipher with cryptography work. It is one of the most basic algorithms, which I mentioned before is you shift every alphabet by 3. Now here, if let's say I have the plain text and I shifted everything by 3 and I give the message to someone here. Let's say if that message gets intercepted and someone reads it. If he knows उसको 3 से reshift करना है पीछे, then he can easily read it. There is no magic in that. वो उसको पीछे करेगा और वो रीड कर देगा. इस वाले केस में आपके एल्गोरिथम है, तो एक फ्लॉ है. अगर एल्गोरिथम सबको पता हो, तो in that case your encryption is not full. It's a weak encryption. So symmetric encryption, what it has same keys for encrypting and decrypting. Now I'll get to that later. Now every now and then there are new encryption algorithms that come out. So what happens is, let's take an encryption algorithm of some gibberish, जहाँ पे हम shift कर देते हो, let's take Caesar cipher. Now in that case, if you know the algorithm, then you're done for. So what scientists did was, they thought कि हम algorithms copy कर देते हैं, सबको पता रखने देते हैं क्या algorithm. हम क्या करेंगे, हमें key register देंगे. अब वो जब की होगी, वो जो बनाने वाला होगा और जो फाइनली रीड करने वाला हो, उन दो ही लोगों के पास हो. तो इस मैकेनिज्म से they introduced the now in symmetric encryption, there is a single key that is on the side of the person who wants to send the message and on the side of the person who has to read the message. Okay? I'll reiterate. In symmetric keys, in symmetric encryption, there is just one key. So use OTA encrypt the memo and use OTA exit front. Now the understanding here is that कि जो भी रिसीवर है उसके पास की होनी चाहिए और जो भी एनक्रिप्टर है उसके पास की होनी चाहिए. एंड दैट इज इट. द एल्गोरिथम कैन बी पब्लिक एंड वी डोंट केयर, क्योंकि हमें पता है की उनके पास नहीं है. जब तक की उनके पास नहीं है तब तक वो उसको डिसाइफर नहीं रख सकते. नाउ देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ एनक्रिप्शन व्हिच इज सिमिलरली asymmetric encryption. The asymmetric encryption में क्या होता है? There are two types of keys, public keys and private keys. In this case, the sender encrypts it with his key, with the public, okay, and then sends the message out. जिसके पास final key होती है वो decrypt कर पाए. We'll get to this later. Now let's talk about a couple of examples in the symmetric encryption. Now, I would like to let all of you know that we'll be diving a little deeper into these encryption algorithms. So I'll try to keep it slow. It would be great if you can follow me up here. Alright, so I touched upon symmetric encryption, which has the same key for encryption and decryption. These are some of the algorithms that are used
that follow symmetric encryption. DES, triple DES, and AES. Now, let's talk about DES. So DES was one of the first algorithms that was coined, which followed symmetric encryption. This meant the encryption and decryption was done by the same key, and the key size was 56 bit. Please note the key size here. We'll be needing that further on. The key size here tells us कि जब आप उसको encrypt कर रहे हैं, तब आपकी जो key थी उसका size कितना था. That's all there is. Alright. The TES encryption algorithm, when it came out, people realized कि ये बात easily crack हो रहा है, because as the computers got faster and faster, the encryption algorithms fell flat. So they had to introduce triple DES, जो TDS को 3 बार करता रहा. That also fell flat in around 10 to 15 years. Then they came up with DES. Now AES is Advanced Encryption Standard. Now this algorithm is still used and we are currently using everywhere. It is there in your phones, it is there in your computers, it is everywhere. AES. We'll dive into this soon. For asymmetric encryption algorithm, I think you all guys would be super aware of RSA. You guys hear about RSA everywhere. It has 1024 key size, 2048 key size, and more on. There is miniOrange and encrypted cryptography, which I will not be covering in this part. So let's move on. Let's talk about AES, Advanced Encryption Standard. With AES, what happens is, let's say I want to encrypt, I will be diving right here. Let's say I have to encrypt the word. This is a plain text. What AES does is it first converts the plain text into binary, okay, and then brings out the bytes. So this is how it first translates into एक chain बन जाती है सारे bytes. Now please note, जैसे Caesar cipher में हम एक character को shift कर रहे थे. When algorithms got more advanced, they realized that it was easy to crack those kind of algorithms. क्योंकि मुझे सिर्फ पता हो अगर मेरे को key से shift करना है या फिर इसका substitution कोई है, तो मैं easily find out कर सकता था कि उसका original value क्या है. So what we do in AES this. So let's take an example, plain text. So we convert that plain text into byte and then bring it down into a matrix. Now AES is 128-bit encryption algorithm. मतलब सारा कुछ भी अगर आप text pass करोगे, it would be chunk broken down into 128 bits. Okay? And then it would be stored in the form of matrix. ऐसा आपको नीचे दिया है. Now if you see, in the matrix, every byte is aligned. So you will see byte 00, then byte 01, then byte 02, 03, and so on. आपका जो chunking हुआ ऊपर से, that is assigned into columns. Right? I'll just re-explain what I said. Let's say you have an example of converting your plain text 1 into AES encryption. So what you do is you convert 1 into byte array, then you chunk it down into a matrix, this form of matrix. Now, this is very important because AES is a cipher block kind of encryption. block cipher block का क्या मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर को एंक्रिप्ट नहीं करते हैं हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं. इस वाले केस में भी हमने 128 बिट का एक ब्लॉक लिया, ठीक है, हम उसको एंक्रिप्ट करेंगे तो हम पूरा मैसेज देते हैं, उसको ब्रेक करते हैं 128 बिट के चंक्स में, उसको ऐड करते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ब्रेक आउट करते हैं और उसके बाद अब उसको एल्गोरिथम में डालते हैं. ठीक है, तो बस दिस इज क्लियर. There are 3 key sizes that AES supports. It is 128, 192, and 256 bits. And based on your key size, it has the number of rounds. So higher your key size, higher is the number of rounds. More the rounds, it will give you more security. So it is harder to break. So when I say 128 bit 10 rounds, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सिंपल होता है. हमारा इसको ब्रेक नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से.
फन फैक्ट, एईएस एन्क्रिप्शन जब आया था तो 128 बिट का भी ब्रेक करने में करीब करीब 27 साल लग गई. उसके बाद वो ब्रेक हुआ. तो देन वी केम अप विथ 192 and 256. Alright? So once this part is clear that we chunk and we divide it into a matrix, let's move on. Now one thing to note is that AES follows a concept of finite field. So when I say finite field, जब ये 128 बिट का बॉक्स है, I have to make sure इसमें से पूरी भी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो ना हो जाए. So I have to do the mathematical operations which keep the number of bits exactly the same. Exactly the same मतलब 128. अगर मेरा ये बॉक्स है 128 का, तो मैं मल्टीप्लाई करके एडिशनल अगर कैरी ओवर है तो मैं उसको पार नहीं ला सकता हूँ. मैं कैरी ओवर नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, मैं सबट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट आता है गैलीलियो फील्ड्स का. फाइनाइट फील्ड्स भी बोलते हैं. इट वुड बी ग्रेट इफ यू गाइस कैन लुक इट अप लेटर. आई विल नॉट डाइव इनटू दैट बिकॉज इट्स टू मैथमेटिकल फॉर दिस सेशन. सो जस्ट कीप इन माइंड कि ये मैट्रिक्स का बॉक्स कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता है. जितना आप इसमें बाइट्स डालोगे उतने ही रहते हैं. ठीक है, दैट मेक्स श्योर, दैट इज द कूल पार्ट अबाउट द बॉक्स. नाउ विल सी कि हम इस डेटा को जिब्रिश कैसे बनाएंगे कि कोई पढ़ ना पाए. सो ये इमेज देख के ज़्यादा घबराना मत. जस्ट ट्राई टू कीप अप विथ मी and I'm very sure that you will be able to understand how AES works, and it is pretty darn cool how it works and how they came up with it. Let's say we have a plain text. The first step that we do is we XOR it, sorry, my pronunciation goes bad. We XOR it with the key. Now we all know यहाँ पे key थी, 128 bit की थी, 192 की थी और 256 की थी, 3 की थी. I will stick with 128 for this example. 128 बिट की जो की थी हम उसके साथ XOR करते हैं. प्लीज नोट, XOR इज एन ऑपरेशन जिससे कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है. जितने आपके डिजिट्स हैं उतने ही रहते हैं, जितने बाइट्स हैं उतने ही रहते हैं, कभी ओवरफ्लो नहीं होता है. दैट्स द कूल पार्ट अबाउट XOR. सो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट XOR विद द की. नोट आई हैव रिटन K0. यहां पे मैंने K0 इसलिए लिखा है क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, अगर हम सिंपली की यूज कर देंगे तो इट विल बी सिंपल. आप लोगों को ये चीज नोट करनी है, ये सारे स्टेप्स इसलिए बनाए गए हैं टू मेक इट एज रैंडम एज पॉसिबल, एज हार्ड टू क्रैक एज पॉसिबल. ठीक है, बट दे ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ये सब रीट्रेसेबल हो, क्योंकि हमें इन्हें डिक्रिप्ट भी करना है एनक्रिप्ट करने के बाद. तो अगर ये रीट्रेसेबल नहीं होंगे तो हम कभी इनको वापस पहुंच ही नहीं पाएंगे यार प्लेन टेक्स्ट पे. तो इनका मेन फंडा था कि इसको मुश्किल भी बनाना है बट रीट्रेसेबल भी बनाना है. तो they came up with a set of operations, जो mathematical operations. XOR is one of them. We do an XOR with K0. K0 is हमारे पास जो की होगी हम उसको extend करते हैं and we create keys जितने हमारे पास rounds होते हैं. So when I said rounds, so if we go back to the old slide, we see 128 bit में 10 rounds होते हैं. And this entire process is just one round. All right, the computer will be doing this 10 times and then would be coming up with the ciphertext. All right, so let's take with K0. K0 is the first key जो वो जनरेट करता है. तो वो बेसिकली 11 कीज जनरेट करेगा उसी एक की से, उसको स्केड्यूल कर करके आगे बनाता जाता है. ठीक है, तो हमने ये पता चल गया कि आपके पास एक डेटा था, आपने उसको चंक किया 128 बिट में, आपको इसने एक मैट्रिक्स में डाला. अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको XOR कर रहे हो अपने की के साथ. आपने एक बार XOR कर दिया, देन वी गेट अदर सेट ऑफ डेटा हियर. उसके बाद वी डू SNP नेटवर्क्स. SNP नेटवर्क्स इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन. सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन में क्या होता है कि जो आपका बाइट होता है, यू रिप्लेस दैट बाइट विथ अ डिफरेंट बाइट. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. आपके सबके कंप्यूटर्स में ये चीज़ें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एम्बेडेड होती हैं कि एक लुकअप टेबल होता है हैश मैप पर से. यहाँ पे सबको हैश मैप पता होगा. तो अगर बाइट X आया है तो मुझे उसको रिप्लेस करना है बाइट Y से. इसका एक लुकअप टेबल होता है
आपके सबके माइक्रो प्रोसेसर्स में. तो what we do is we do substitution. So basically यहाँ पे सारे बाइट्स को हम लुकअप करते हैं और उनको उस लुकअप टेबल से रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x becomes y, z becomes something else, and more on. Then what we do is then we do permutation, which has two parts: shifting and mixing. Now what I mean by shifting and mixing? It's very simple, explanatory yourself. So when we do shift rows, जो बाइट 0 है वो एंड में चला जाता है, जो बाइट 12 है वो यहाँ आ जाता है. ऑल वी डू इज शिफ्ट बाय 1, सबको यहाँ मूव करते जाते हैं एक एक से. ठीक है. देन वी डू मिक्स्ड कॉलम्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हम लोग कॉलम्स को लेते हैं और उनको जंबल करते जाते हैं. नाउ इफ यू सी, अगर हम लोग रोज को भी शिफ्ट कर रहे हैं, कॉलम्स को भी मूव कर रहे हैं, इट बिकम्स एब्सोल्युटली जिब्रिश. एंड देन वी एक्सॉर इट विद द की अगेन. This constitutes to just one round. We do around 10 rounds for 128 bit of keys. This is how AES works. I will quickly reiterate. We chunk into 128. हम मैट्रिक्स बना देते हैं. मैट्रिक्स करने के बाद हम XOR करते हैं उसको की के साथ. हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, परम्यूटेशन करते हैं, and then we XOR again. And that is it. अब I said that it is there in your laptops. Now the cool part with AES is that it's super fast. Sorry. My clicker is also fast. Okay. So the thing with AES is super fast because, as I mentioned, substitution का एक lookup table होता है और hash maps बहुत fast होते हैं. तो when everyone uses AES, they are able to decrypt GBs of data in few milliseconds. तो अगर आपके डिस्क में कुछ भी एनक्रिप्टेड है, यू डबल क्लिक ऑन इट और वो खुल जाता है, आपको तुरंत दिख जाता है. तो AES इज सो फास्ट कि उसको माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल और AMD प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है यूजिंग, आई होप यहाँ पे सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक समथिंग कॉल्ड रजिस्ट्रीज होते हैं. ठीक है. तो जो माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्ट्रीज होती हैं उनमें इनको एम्बेड किया जाता है सो दैट दे आर वेरी फास्ट टू एग्जीक्यूट. ऑलराइट. सो I will be moving on here. This is some of the basics that I hope you guys understand, which is prime numbers, semi-prime numbers, and modulos. Prime numbers are nothing but 2, 3, 5, 7. Don't worry, arithmetic नहीं सिखाऊंगा मैं. I am stating a basics for how RSA works. All right. So it is very important that you know how prime numbers, semi-primes, and modulos work. Semi-prime is nothing but a multiplication of two prime numbers. That is all you need to know for now. All right. So let's, I think I don't have a lot of time left. I'm sorry for that. So I'll try to explain it as quickly as I try. It's very difficult, but okay. So RSA में main concept ये होता है, as I mentioned, prime numbers and semi-prime numbers. So the main problem is दो प्राइम नंबर का जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक सेमी प्राइम नंबर होता है. और अगर आपके पास सेमी प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया 14, हमने दो प्राइम नंबर लिए 2 और 7, उसका प्रोडक्ट लिया 14. हमने उससे एक्सट्रैक्ट किए दो वैल्यूज, पब्लिक की और प्राइवेट की. उसके हमारे कुछ मेट्रिक्स होते हैं जिसके हिसाब से हम पब्लिक की एंड प्राइवेट की डिसाइड करते हैं. टोशेंट एक वैल्यू होता है जो द ग्रेट यूक्लिड ने एक फॉर्मूला बताया हमें, P-1 एंड Q-1. इससे हमें टोशेंट मिलता है. टोशेंट इज नथिंग बट टू फाइंड अ को प्राइम ऑफ 2 and 7. नाउ I don't have a lot of time, so I'll skip that. What I want you to know is कि हमने 2 और 7 इन दो प्राइम नंबर से दो कीज बनाए, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, 5 and 11. एंड द मेन कूल थिंग अबाउट दिस is this part. Let's say we have a message B and we'll convert that into a number 2 because A को हम 1 मान लेते हैं तो हमने B को 2 मान लिया. ठीक है. And we have public key as 5 and private key as 11. The whole RSA algorithm works on this formula wherein you raise your message by E, which is an encryption key, and mod it by the multiplication of your prime numbers, which is 14.
तो हमने क्या किया, 2⁵ mod 14 एंड वी गॉट अ नंबर 4 D. ये हमारा साइफर टेक्स्ट है विच आई टॉक्ड अबाउट. नाउ when we have the cipher text, what we do is हमारे पास जो प्राइवेट की है हमारा सेम फॉर्मूला है. हम क्या करते हैं, 4 को will raise to D which is हमारा प्राइवेट की. So we'll raise it to power D and we do a mod n which is again our product and we get the same number again. This is the root of RSA. Now you will think कि ये तो बहुत आसान था, but ये नहीं था क्योंकि we took just one सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर लिया. I guess my time would be up soon. What I would like you guys to know that in real life we use 1024 bit of prime numbers. They are so huge. जब RSA लॉन्च हुआ था तो उन्होंने 27 प्रोडक्ट्स दिए जो n नंबर होता है. उन्होंने 27 ऐसे n दिए और उन्होंने बोला कि जो भी इसको क्रैक कर देगा हम उसको $10 मिलियन देंगे. उसके बाद से 25 साल हो गए हैं, उसमें से सिर्फ 5 पता चले हैं. और ये इतना मुश्किल है प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट. जो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है विच इज 14 इज वेरी स्मॉल नंबर, सो यहाँ पे हमें छोटा लग रहा है, बट व्हेन इट गोज वेरी लार्ज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड 2 and 7. दैट्स द क्रक्स ऑफ RSA कि आप प्राइम नंबर्स नहीं ढूंढ सकते हो. और यूक्लिड का एक खूबसूरत फॉर्मूला था फॉर फाइंडिंग आउट टोशन विच आई मेंशन्ड अर्लियर. How much time do I left? Okay. So, as I covered RSA, let's talk about hashing. Hashing is a one-way process, जिसमें instead of doing a cipher text, we do a digest. All right. Now, before doing this, I just want to cover one more thing. That RSA is commutative. What do I mean by commutative is, अगर मैंने 2⁵ अपना प्राइवेट की किया होता 11 एंड mod 4 करता एंड उसके बाद 11 को 5 से रिप्लेस कर देता, इट वुड हैव स्टिल वर्कड. नाउ द ब्यूटी ऑफ RSA इज कि प्राइवेट की और पब्लिक की आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. अगर आपने एक से एनक्रिप्ट किया तो आप दूसरे से डिक्रिप्ट कर सकते हो और दूसरे से एनक्रिप्ट किया तो पहले से डिक्रिप्ट कर सकते हो. दैट्स द कूलेस्ट पार्ट ऑफ RSA एंड दैट ऑल्सो गिव्स अस the basics of digital signature. Now I want to cover digital signature क्योंकि आगे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में, आगे बहुत सारे सेशंस में डिजिटल सिग्नेचर वर्ड बहुत फेंकते हैं लोग कि भाई हम साइन करा देंगे, हम ये करा देंगे. अब डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब है? अगर मैं एक सेंडर हूँ, मेरे पास एक प्राइवेट की है, तो मैं क्या करूँगा, RSA में मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, मैं उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा अपने प्राइवेट की से और एक कुछ तो वैल्यू आएगी. मैं उस वैल्यू के साथ अपने प्लेन टेक्स्ट को भेज दूंगा आगे, जिसको भी वेरीफाई करना होगा कि ये मैंने भेजा है कि नहीं. वो मेरी पब्लिक की से वो टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा और अगर उसकी वैल्यू सही है तो उससे ये पता चल जाएगा कि वो जो प्लेन टेक्स्ट भेजा है वो मैंने भेजा है. नाउ डिजिटल सिग्नेचर इज एवरीवेयर. you see a lock icon on your browser, वो भी साइनिंग ही होता है. इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. जहाँ पे जो भी यूजर अपना डेटा बताना चाहता है सबको, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक की पेयर जनरेट करूँगा विथ अ प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की. मेरा सारा डेटा मैं उसको अपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करूँगा और डेटा के साथ सेंड आउट करूँगा. व्हेन दैट इज देयर, उसके बाद जो भी उसको रिसीव करेगा, whoever receives it, he will first decrypt the encrypted part using his public key. He will validate, oh, that's the guy I trust, and then he understands the integrity of it. So putting things into perspective, digital signature is there to check the integrity. I am not concerned कि मेरा message किसी को मिल जाता है. I don't care about that. I care कि मेरी integrity is there. So encryption is used for hiding the data, and or signature is used for maintaining and checking the integrity of the data. And I think that should wrap it up. So these are the few takeaways. And so I covered these. And then if you have any questions, I would be here for a couple of time. You can reach out to me if you have questions now.
can take them. Yes, please you can. Yeah, please. Can you please come forward? Right. So I was asking AES, you mentioned that while using substitution, we will use a lookup table, right? That is present in the microprocessor of this. So my question is, अभी अपना encrypt कर लिया और decrypt के बाद हम दूसरे system पे कर रहे हैं, Right. same lookup table वहाँ भी रहेगा? राइट तो जो भी हमारा सब्स्टिट्यूशन का टेबल होता है दैट इज ऑल्सो जेनेरिक, वो एल्गोरिदम के अंदर ही है और वो वाइट पेपर में पब्लिश्ड होता है. तो सब्स्टिट्यूशन के लुकअप टेबल्स आर अवेलेबल एवरीवेयर एंड दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट अक्रॉस द माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाई दे हैव बिकम द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उसकी वजह से अगर दे आर एम्बेडेड इन द माइक्रोप्रोसेसर इटसेल्फ तो दे कैन यूज द चैनल बैंडविड्थ्स वेरी नाइसली एंड दे encrypt very quickly. But overall, lookup tables are very generic and are included in the RFCs also. They are very public. Okay, the main part is the keys here. All right. Yeah. What algorithm is used at cipher to decrypt ciphertext into plain text? What algorithm is used? That depends upon what algorithm you're using to create the ciphertext in the first place. It has to be the same. So what, like I mentioned, you have symmetric algorithms and asymmetric. So in case when you connect to the Wi-Fi, you use AES, which I explained. So वहाँ पे लिखा आता है WPA security, WPA2 security. ये दोनों का बेसिस AES ही होता है. तो एज माई फेलो आस्ट कि लुकअप टेबल कैसा होगा, WPA के लिए अलग होगा, WPA2 के लिए लुकअप टेबल्स अलग होंगे. तो जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि साइफर टेक्स्ट में एल्गोरिथम कौन सा यूज़ होता है, बेस्ड ऑन अब अगर हम AES यूज़ कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए तो AES होगा, नहीं तो RSA यूज़ कर सकते हैं. I have a last thing. Like nowadays, when we connect our devices to a Wi-Fi router using WPA2 or that security, especially iOS or iPhone or Mac devices, they show a weaker security exclamation. So why is it so? Weaker security for WPA or WPA2? WPA2. Okay, I am not aware of that. Sorry, Okay. not answer that. Okay. Probably they wanted to shift to WPA enterprise. So there is also WPA3. Yeah. So WPA, WPA2 and WPA3, they all have underlying AES. It's just the basis of the key size, which I mentioned. So अगर key size 128 bit है, तो उसके बाद आता है 192 and then 256. तो कई बार क्या होता है, आप की साइज के हिसाब से वर्जनिंग अलग अलग कर सकते हो और एल्गोरिदम्स भी चेंज हो जाते हैं. इनका बेसिस AES ही होता है, बट WPA2 किसी और एडिशनल एनक्रिप्शन मेथड एक ऐड कर दिया, जैसे मैंने XOR वगैरह का बताया था. उस वाले केस में अगर 2-3 और ऐड कर दिए तो नया वर्जन बन जाता है. बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर. So in Wi-Fi routers and all those, we use a symmetric algorithm. Correct. Mostly because they are fast. एब्सोल्युटली राइट. जहाँ भी हमें फास्टर लुकअप टेबल जैसा मैंने आपको मेंशन किया, दे मेक श्योर कि दे आर वेरी फास्ट. तो रिट्रीवल और एनक्रिप्शन जहाँ भी फास्ट होता है वहाँ पे हमें AES यूज़ करते हैं. और जहाँ पे सिक्योरिटी एट ट्रांजिट या सिक्योरिटी एट रेस्ट जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे क्या असिमेट्रिक होता वहाँ पे हम लोग असिमेट्रिक करते हैं. तो जैसे अगर आप है? SSL क्लाउड सिक्योरिटीज या जो करेक्ट, तो SSL सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे हम RSA यूज़ करते हैं. एंड अगर आप गूगल को भी चेकआउट करोगे तो वो एलिप्टिकल यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक. राइट. और कुछ लोग डिलिव एफमैन यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा नहीं यूज़ होता है. बट गूगल हैज शिफ्टेड टू एलिप्टिकल बिकॉज इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट टू क्रैक द RSA. थैंक All right, so just one more thing. You can scan this QR code to give me feedback and also let your learnings in for your, if you want certificate that you attended this session, it would be great that you can enter your learnings about the session. Thank you. I'll be here close by. Any more questions would be, I'd be happy to answer them. Thank you so much.